Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So dear, after completing our chapter My Childhood, now we do have a short poem and name of that poem is A Legend of the Northland. Okay, so as the name suggests, a legend. It's a we can say that poem A Legend of the Northland is a Northland folk tale that has been passed down several generations. It's a narrative of Saint Peter and the old woman who was punished for her selfishness. The story teaches us not to engage in greed and to value the traits such as compassion and empathy. If we are discussed about the poet, so Phoebe Cary is an American poet. She is the sister of Alice Cary, who is also a poet. They have published several poetries both together and individually. The poem tells the story of an old lady who angered Saint Peter due to her greed. The setting is the Northland where the old lady resides. She was selfish and greedy too. Saint Peter used to wander across the world, giving religious speeches to people. The Saint Peter arrived at the lady's house one day, and she was making cakes at that time. Since the sun had fasted for the whole day, so he was starving and feeling very weak, and we can say that he was very hungry. So he requested that the woman give him a single slice of cake. The woman was highly selfish. She got the impression that the cakes she had cooked were rather big. She started baking a new cake since she didn't want to give away the big ones she had already baked. However, she soon realized that the new cake was bigger. So she rolled out a little piece of dough and flattened it out. She made it to the size of a wafer. However, she was unable to share even that little with the son. The son became angry as he observed the woman's behavior. He declared her unfit for human life and caused her to become a bird. The woman was converted into a woodpecker as a result of the curse. She was now digging dry wood for shelter and searching the area for items to eat as birds do. I hope you will understand what I want to say. Okay, now the poem narrates the legend of an old lady who angered St. Peter because her greed. So, first of all, we are having legend, an old story that may or may not be true. Such stories, when they group together, like प्राचीन कथा और लोक कथा. सो ये जो पोएम है वो हमें ऐसी पुरानी कथा के बारे में बताती है जो एक ओल्ड लेडी की है वो एंगर्ड संत पीटर जिसने संत पीटर को नाराज कर दिया था बिकॉज ऑफ हर ग्रीड अपनी लालच की वजह से. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट stanza of the poem, A Legend of the Northland. So let's start. Away, away in Northland,
where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep through them. Okay, so now we are going to start this poem. So we are having away away in the Northland, दूर दूर तक Northland में, where the hours of the day are few, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम ही होते थे, and the nights are so long in winter, मतलब दिन छोटे हैं और रातें बड़ी हैं, that they cannot sleep them through. We can say that they cannot sleep them through. Okay, so now what exactly the poet wants to say कि दूर दूर तक Northland में. The author talks about the place where the story began in the opening. The story starts in the winter season, chilly Northland area, where the days are short and the nights are long. The people of Northland were unable to sleep at night due to the intense cold. मतलब इतनी ठिठुरती हुई ठंड होती है that the people that they know that वो लोग cannot sleep them through. सो भी नहीं पाते. Or we can say that they were unable to sleep at night due to the intense cold. When it snows in Northland, the locals tie their beautiful reindeer to sledges and travel by sledge. The children are dressed in warm, furry clothing to resemble bear cubs. Means to say, now we're just going to read the next one, stanza. So before doing that, let me clear this again that what is actually given in the first stanza. दूर दूर तक नॉर्थलैंड में लोग ना रात को सो नहीं पाते थे. What was the reason? And the reason was exactly that only. What? Because they do not know. They do have very short days and nights are very long. I hope you will understand this. Okay. Nextly, we do have where they harness. We are just discussed about stanza number 2. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears, cubs in their funny, furry clothes. So, what exactly the poet wants to say? That when it snows, जब बर्फ पड़ती है ना नॉर्थलैंड में, the locals tie their beautiful reindeer to sledges and travel by sledges. वो सवारी बना लेते हैं रेनडियर को, अ किंग ऑफ डियर, उसको सवारी बना लेते हैं और उसी से ही वो क्या करते हैं, टाई अप करते हैं. एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे होते हैं ना, लुक लाइक बियर्स कब, वो भालू के बच्चों की तरह लगते हैं. इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि बहुत ठिठुरती हुई ठंड होती है, तो बच्चे इस तरह के फनी और फरी क्लोथ्स पहनते हैं कि वो ऐसे रिसेंबल होते हैं कि जैसे कोई भालू का बच्चा हो. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. They tell them a curious story. I don't believe this true. They tell them, वो उन्हें एक बहुत ही उत्तेजित कहानी जो है वो सुनाते हैं. I don't believe this true. मुझे नहीं पता कि वो सच है या नहीं है. I don't know about that. कि वो उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है. We don't know about that. But वो एक बहुत ही क्यूरियोसिटी से जो है वो सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं.
Okay, then nextly, what we have do it in that. Once when the good, I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. लेकिन मुझे इतना पता है, I don't know कि this story is true or false, but yet, लेकिन फिर भी you may learn a lesson. आप एक लेसन, एक सीख जरूर सीख जाओगे if I tell you the tale to you. अगर मैं आपको ये कहानी सुना दूं तो आप एक सीख जरूर लोगे. I don't know it's true or not, but if you listen, if I tell the tale, you may definitely learn a lesson from it. Next, once when the Sant Peter lived in the world below. Now, what exactly is that? Okay. Once when the good Sant Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार जब बहुत ही महान संत पीटर जो लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जो संसारिक जीवन में अपना जो जीवन है वो यापन कर रहा था, एंड वॉक अबाउट इट, और घूम रहा था प्रीचिंग. प्रीचिंग होता है, प्रीचिंग मीन्स प्रचार करते हुए, अपने धर्म का प्रचार करते हुए वो घूम रहा था. जस्ट एज ही डिड, और उसी तरह जैसे वो हमेशा ही करता आया. यू नो, जैसा आप जानते हो कि जैसे वो हमेशा से ही उन चीजों को करता आया. ओके, देन नेक्स्टली व्हाट एग्जैक्टली वी डू हैव कि एक बार संत पीटर जब वो नीचे धरती पर रहते थे, उपदेश देते हुए, प्रचार करते हुए अपने धर्म का घूम रहे थे. जैसा कि आप जानते हो कि नॉर्मली जो संत होते हैं उनका काम ही यही होता है, प्रीचिंग करना. So he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Okay, so cottage, कुटिया, hearth, चूल्हा, चूल्हे के सामने वाली जो जगह होती है. He came, now संत पीटर एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा. In traveling round the earth, जब वो धरती पर घूम रहा था, जब वो ट्रेवल कर रहा था, तो वो एक कुटिया के दरवाजे पर पहुंचा. वेयर अ लिटिल वुमेन, जहां पर एक बूढ़ी औरत केक बना रही थी. एंड बेकिंग देम, और उसे सेक रही थी ऑन द हर्थ, किस पे, चूल्हे पे. नाउ एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, क्योंकि दिन लगभग खत्म हो गया था और वो फास्ट पे थे. फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरे दिन भूखा रहने के बाद. ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस औरत को पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि उसके पास जो केक का भंडार है, क्या वो उसमें से एक केक मुझे देगी. मतलब वो संत जो है वो काफी लंबे टाइम से भूखे थे, तो वो बेहोश होते जा रहे थे, मतलब भूख की वजह से, फास्टिंग की वजह से. तो उन्होंने उस औरत को, उस बूढ़ी औरत को बोला कि क्या जो तुम्हारे पास केक्स का स्टोर है, तो क्या तुम उसमें से मुझे एक सिंगल केक जो है वो दे सकती हो. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So she made a very little cake. तो वो क्या करती है, बहुत ही छोटा सा केक जो है वो बनाती है. बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन वो जैसे ही उसको रखा हुआ वो जब वो सिक रहा होता है, बेक हो रहा होता है, शी लुक्ड एट इट, वो उसकी तरफ देखती है, एंड थॉट, और सोचती है, इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब संत को देने में तो ये बहुत बड़ा है. मीन्स लालची व्यक्ति किसी को कुछ नहीं दे सकता, छोटी सी चीज पे भी उसे बहुत
जो छोटी सी चीज है ना वो भी उसमें बहुत बड़ी नजर आती है. So that old lady was just a kind of greedy person who टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी वो. उसको वो पीस जो था वो बिल्कुल मतलब बड़ा लग रहा था कि मैं ऐसा इतना बड़ा केक तो नहीं दे सकती. Therefore she needed another and still a smaller one. Needed गूंदना, जो स्टफ बनाते हैं केक बनाने के लिए. अब उसने दोबारा स्टफ बनाया and still a smaller one. और पहले से भी छोटा एक केक जो है वो बना दिया. बट इट लुक व्हेन शी टर्न्ड ऑफ इट ओवर. अब जब वो उसको मुड़कर दोबारा से केक को देखने लगी, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. उसे लगा कि जैसे मैंने पहले बनाया था ना ये तो उससे भी बड़ा हो गया. देन शी टुक अ टाइनी स्कार्प ऑफ डो. अब उसने क्या किया, बहुत छोटा सा ही, मतलब जो गूंदा हुआ आटा होता है यानी कि जो स्टफ होता है वो छोटा सा ही लिया. एंड रोल्ड इट फ्लैट. और उसको क्या कर दिया, बेल बेल कर एकदम फ्लैट कर दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. और उसे बिल्कुल पतले से केक को बिल्कुल पतला सा कर दिया वेफर की तरह. बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट. लेकिन वो उसको उस पतले से वेफर के रूप में जो उसने बनाया था ना वो भी शेयर नहीं कर पाई. मीन्स लालची के हाथ से कोई चीज छूटती नहीं है. फॉर शी सैड, माई केक्स that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. For she said, इसके लिए उसने कहा, my cakes that seem too small when I eat of them myself. कि मेरे केक जब मैं स्वयं उन्हें खाती हूँ ना तो मुझे वो छोटे लगते हैं. Are yet too large to give away. लेकिन अब अगर मुझे ये देने हैं तो मुझे ये बहुत बड़े लग रहे हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. तो वो क्या करती है, जो केक उसने बनाए हैं वो सभी उठा के शेल्फ पर रख देती है. अतः वो क्या करती है, उसने अपने उन्हें भी ताक में रख दिया और संत को नहीं दिया. मीन्स लालची स्वयं उपयोग करे तो लगता है कि कम यूज हुआ है और थोड़ा सा अगर किसी को देना पड़े तो उसे वो चीजें बहुत ही ज्यादा लगती हैं. Nextly, we do have the next stanza. Then good Sant Peter grew angry. अब उसकी इस हरकत से जो संत पीटर थे वो बहुत गुस्सा हो गए. For he was hungry and faint. क्योंकि वो बहुत भूखे थे और लगभग बेहोश हो रहे थे. And surely such a woman, surely such a woman was enough to provoke a sant. अब वो कह रहा है कि वो भूखे थे और बेहोश हो रहे थे और निश्चित ही ऐसी महिला ने एक संत को भड़काने के लिए जो किया वो बहुत ही इनफ था. मतलब उसने उनको बिल्कुल गुस्सा दिला दिया, भड़का दिया. एंड ही सेड, यू आर फार फ्रॉम सेल्फिश, यू आर फार टू सेल्फिश. और उन्होंने उसको कहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म. तुम इंसान के रूप में तो रह ही नहीं सकती. तुम ड्वेल का मतलब होता है रहना. इंसान कहलाने लायक नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म. तुम्हें चीजें, भोजन और रहने की जगह मिले और आग की गर्माहट भी मिले. तुम इनके योग्य नहीं हो. तुम इन चीजों के लायक नहीं हो. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. अब यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. नाउ वट the poet want to say that you shall build as the birds do. अब तुम बनाओ, वैसा बनाओ, उसी तरह से मेहनत करके बनाओ जैसे पक्षी बनाते हैं. And shall get your scanty food. Scanty बहुत थोड़ा सा खाना. अब तुम पक्षियों की तरह मेहनत करके घर बनाओगी और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन ही दिन भर में ला पाओगी. By boring and boring and boring. Boring
छेद कर करके, होल्स कर करके तुम्हें अपना रहने की जगह और अपना खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सूखी लकड़ी में छेद करके ही तुम अपना खाना बहुत मेहनत करके ही प्राप्त कर पाओगी। इट मीन्स वी कैन से दैट लालची उस ग्रीडी वुमेन को संत पीटर ने एक तरह से श्राप दे दिया। Nextly, we do have, then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. वुडपीकर जो कठफोड़वा होता है, then up she went through the chimney, never speaking a word. तब वह एक शब्द भी ना बोलते हुए चिमनी से ऊपर चली जाती है और चिमनी के ऊपर से एक कठफोड़वा उड़ जाता है। ओके, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, सो शी फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड। अब क्या वो बिना कुछ शब्द बोले चिमनी के ऊपर से जाता हुआ उसे कठफोड़वा उड़ा, क्योंकि अब वो एक पक्षी के रूप में बदल गया। यानी कि अब ये कठफोड़वा कौन है, ये वुडपीकर कौन है, वो लेडी जो लालची थी। यानी कि अब उसको श्राप दिया और वो तुरंत ही बिना कुछ कहे, बिना कुछ कह कर पाए, वो एक बर्ड, एक पक्षी के रूप में बदल गई। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर बिल्कुल सिंदूरी रंग की एक टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और वो वैसी की वैसी ही वहां पर रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन उसके बाकी के जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और बिल्कुल जो सिंदूर कलगी वाला पक्षी होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह वो बिल्कुल काली पड़ गई। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और गांव में रहने आने जाने वाले हर लड़के को, हर बच्चे को उस मतलब जो है वो जंगल में दिखाई दी। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहां वो पेड़ों में रहती है। टिल दिस वेरी डे, आजकल के दिनों में। बोरिंग एंड बोरिंग हर फूड, छेद कर करके वहां पे वो अपना खाना बनाती है। A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Here we do have called it a ballad. Ballad जो 4 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है, राइमिंग स्कीम में उसको बैलेड बोला जाता है। सो दिस इज अ बैलेड सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा, जो बहुत ही छोटे छोटे स्टेंजाज में नरेट करके जो है वो बनाया जाता है। सो दैट वाज दीज वर द ballads. Ballads are a part of folk culture, of popular culture, and are passed on orally from one generation to text to the next. We can say that ballads are a part of folk culture. फोक कल्चर का एक पार्ट होते हैं, एक पॉपुलर कल्चर है, एंड आर पास्ड ऑन ओरली, जो कहानियां हैं, जो लोक कथाएं हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती रहती हैं। सो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेट, इसीलिए कहा गया है कि जो नॉर्थलैंड की जो स्टोरी है, जो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है, ये क्या है, ये एक तरह का, but we can say that this is a kind of a ballad. I hope you will understand this. Okay. Nextly, what I just want to say in very short. Okay. So we can I just want to say what is the actual message in that. The poet conveys a very beautiful message for the readers. We all are equal in the eyes of the Almighty God, and we should treat
everyone with respect and empathy. We should show love to our fellow beings and we should help the sufferers, those who understand others' plight and show show compassion towards them are loved by God and blessed with more wealth and comforts in life. So, in comparison, those who don't treat people equally and discriminate against them based on their financial status and wealth are never blessed by God. We all are humans, and therefore we should make efforts to learn, to love, and to respect everyone. We must never get greedy and try to help the needy in each possible way. And in this chapter, we do have some poetic devices also. We can say metaphor in swift reindeer. Actually, it refers to a thing, object, and a person. So here the poet has used the personal metaphor, swift reindeer. Similarly, we do have like bear's cubs. Repetition we do have in boring, boring, and boring. Okay, I hope you will understand this. So, thank you. Have a nice day.